हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भादरा जून जालौर। देखिए, ये मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 का सब्जेक्ट मैथ्स का और वही चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। पहले सिलेबस आपको थोड़ा बता देते हैं। ये है आपके क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स का सिलेबस, है ना। तो देखो, अपने फर्स्ट चैप्टर होगा इसमें नोइंग आवर नंबर्स। देखो, नोइंग आवर नंबर्स में क्या है कि नंबर्स किस तरीके से रहती हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ये इनका विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक होता है और हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ होल नंबर। होल नंबर में अपने देखेंगे भाई, नंबर जो रहता है, जब नेचुरल नंबर में अपन जीरो को ऐड कर देते हैं तो होल नंबर बनती है। तो होल नंबर से रिलेटेड ये होल नंबर से रिलेटेड जो हमारी क्वेरीज आएंगी वो हमारे सेकंड चैप्टर में कंप्लीट होंगी, है ना। और अपना थर्ड चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। तो देखो, इसमें क्या है, प्लेइंग विद नंबर्स में हम नंबर्स, देखो वैसे तो ये भी प्लेइंग विद नंबर्स यानी नंबर्स से खेलने की बात हो रही है ना। लेकिन अपने देखते हैं कि भाई, जो जैसे नंबर्स से रिलेटेड पजल्स रहती हैं, नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, उनको हम इजी वे कैसे डील करें, इजी वे कैसे सॉल्व करें, ये समझेंगे इस चैप्टर नंबर 3 में, विच इज़ प्लेइंग विद नंबर्स, है ना। चैप्टर नंबर 4 इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। देखो भाई, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में क्या देखेंगे अपने, ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ यानी कि सपोज एक फील्ड है ना, उसका पेरीमीटर क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा, हाउ वी विल कैलकुलेट द मनी वी हैव टू इन्वेस्ट ऑन डूइंग fencing of that field or on plowing also, that we will learn in this chapter, which is basic geometrical ideas. Our next chapter is chapter number 5, understanding elementary shapes. तो देखो भाई, इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में जो एलिमेंट्री शेप्स रहते हैं, जैसे ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, एंगल्स हैं, है ना, उनको हम अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स नाम से टॉपिक है, इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज इंटीजर्स। व्हाट वी विल लर्न इन इंटीजर्स, होल नंबर्स के आगे की कहानी इंटीजर्स में, है ना। दिस इज द कंटिन्यूएशन, दिस चैप्टर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2, विच इज होल नंबर्स। ओके। नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शंस। व्हाट इज फ्रैक्शंस? Fractions are two numbers which are written, one is above a bar and next one is below the bar. This is called numerator of fraction, and this is called denominator of fraction. Okay, now next one is decimals. In decimals we will deal actually in this topic decimals we will deal with some problem like this: 0.3, 0.2, 2.3, -1.3. okay, and this type of problems, or in this type of problems we have to deal with, or we have to go with something like, what I can say, something like in fraction, if we have to write 1/2, then we will write it decimal as 0.5. okay, this is all that we have to know about the decimals. okay, our next chapter is data handling. In this chapter, data handling, we will handle the data of big campuses or big हाँ जी, नेक्स्ट वन इज डेटा हैंडलिंग, in which we have to handle with the data of big institutions. okay, after that we will deal with mensuration. What is mensuration? Mensuration is the perimeter and what I can say, and area. okay, and if we have to, as I told you earlier, if we have to calculate the perimeter and the
cost of fencing or plowing of a field, then we have to go with mensuration. Okay, last 11th one is algebra. Algebra, in our algebra we have to deal with some basic what I can say, some basic formulas or some basic identities. Yes, some basic identities of algebra, like as a plus b to the power 2 or a minus b to the power 2, a plus b into a minus b. What is a plus b into a minus b? Like this. Okay, and next one is ratio and proportion. Now our exercise number first is exercise number 1.1, chapter number 4 and exercise number 1. This is video 1. Our question number first is fill in the blanks. Okay, so question number first is fill in the blanks. BLANKS, fill in the blanks. Our part A is 1 lakh. Part A is 1 lakh. This is equals to 10,000. HOUSAND 10,000. Number B is 1 million. 1 million. First one is 1 million and 100,000. DRED 100,000. THOUSAND 100,000. And after that, this is part C, which is 1 crore, which is equals to 10 lakhs. 10 lakh. Now our part D is 1 crore. One crore is again equals to 1 crore is again equals to million. Now our part E is 1 million is equals to lakh. This is 1 lakh equals to 10,000. Okay, 1 lakh equals to how many thousand are there in 1 lakh? So here we will see this is ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakhs. So there are 100,000 in 1 lakh. And how many 10,000? Then there are 10,000 in 1 lakh. Okay. 1 point, if we will cross 1 point, then it will be 10. Okay, 10. This is also 10. Again 10. This is also 10. Now this is 1 lakh. And in 1 lakh there are 10,000. Okay. So 1 million, 100,000. 1 million means 10 lakhs, 10 lakhs, and 100,000. So ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, 100,000, 10. Okay, 100,000 comes 10 times in 1 million. Now 1 crore, 10 lakhs. 1 crore, this is lakh, this is 10 lakh, this is crore.
1 crore 10 lakhs, so 10 times 10 lakhs are in 1 crore, are there in 1 crore. Okay, now next one is 1 crore million. 1 crore million, this is 1 crore, and how many million are there? 10 millions are there in 1 crore. Okay, 1 million lakhs, 10 lakhs are there in 1 million, because this is lakh, this is 10 lakh, and this is million. This is 10, this is again 10, so here this is 10 lakhs are there in 1 million. Okay, now exercise number question number second of exercise number 1.1 is place commas correctly and write the numerals. Place commas correctly, place commas place commas correctly and write the numerals, and write the numerals. Place commas correctly and write the numerals. Number A is second part, second number A is 73,75,307. 73 lakh, SEVENTY, 73 lakh, THREE 3 lakh, 73 lakh 75,000, 75,000, 73 lakh 75,000, 307, 307, 307. Okay, now our part B is 9 crore 5 lakh 41, 9 crore 5 lakh 41, 9 crore 5 lakh 41, 41. Next one is C, which is 7 crore 52 lakh, 7 crore 52 lakh, 7 crore 52 lakh, 52 lakh, 7 crore 52 lakh, 21,000, 21,000. Number C is 7 crore 52 lakh 21,000, 302, 21,302, 302. Now our D is 58,400,000, 58,400,000, 58,400,000, 58,400,000, 23,000, 23,000, 23,000, 202, 23,202, 23,202, 202.
हाँ भाई देखिए, पहला है आपके क्वेश्चन नंबर ये है सेकेंड का ए, 73,75,307, 73 लाख। देखो वंस यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लिख के आपको बताता जाऊँगा। दिस इज वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, एंड दिस इज करोड़। ओके, नाउ 73 lakhs, 73 lakhs, so this is 7, this is 3, 73 lakhs. Crore is not here, so crore I will rub, I have rubbed. So 73 lakhs 75,000, 73 lakhs 75,000, 70,307, 307. This is our answer for this first question. Okay, I am going to write over here 73 lakh 75,307. Okay, now part B is 9 crore 5 lakh 41, 9 crore 5 lakh 41, ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. Okay, 9 crore 5 lakh, 9 crore 5 lakh 41, 5 lakh 41, this is 41, and remaining we will place zeros. Okay, so our second one is this is 9 crore 5 lakhs and 41, 9 crore 5 lakhs 41. C is our part C. What is our part C? Part C is 7 crore 52 lakh 21,302, 7 crore, ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. This is 7 crore 52 lakhs, 7 crore 52 lakhs, 7 crore 52 lakhs 21,000, 302, 302. This is our answer. Okay, now our next one D is our last one, which is D is 58,423,000, 58,400. This is our answer for this one. 52221302. Okay, 75221302. Now our part D is, what is our part D? Part D is 58,423,000, 58,423,000, ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000, 1 million, 10 million, and 1,000 million. Okay, 58 million, 50, this is 58 million. Okay, 58,423,000, 423,000, 58,423,202, 202. This is our answer. Okay, now these all are part D's. Okay, exercise 1.1, and our question number next is question number 3rd. Question number 3rd is what? Insert commas suitably and write the number according to the Indian system of numeration. Insert commas suitably number 3rd is insert comma suitably and write the names according to, and write the names according to, and write the names according to, and write the names according to. Insert comma suitably and write the names according to Indian system of numeration. According to Indian system of numeration. Indian system of numeration.
numeration, Indian system of numeration. So our third one is part A is question number third, and our part A is 87595762, and part B is 8562 8546 283. Part C is 9990046 9990046. Part D is, what is part D? 9843 2701. So in this question we have to check द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. देखो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है भाई, पहले 3 नंबर्स आते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक, उसके बाद कॉमा, फिर 1000 10,000, फिर कॉमा, फिर पहले 3 के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 के बाद, है ना, 1000 10,000, उसका लैक्स 10 लैक्स, फिर कॉमा, फिर करोड़ 10 करोड़, फिर कॉमा, इस तरीके से चलता है, फिर अरब, ठीक. और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे चलता है वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊँगा आपको, ठीक है. तो पहले देखो, पहले 3 के बाद कॉमा आएगा, पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, वंस, टेंस, 100 1000 10,000 लैख 10 लाख करोड़. तो ये क्या हुआ आपका 8 करोड़ 8 करोड़ 75,000 8 करोड़ 75,000 8 करोड़ 75 लैक्स 8 करोड़ 75 लैक्स 8 करोड़ 75 लैक्स 95,000 95,762 762 okay. Next or last one is second one is here up to, okay. 2 minutes. 85 lakhs ones, tens, 100 1000 10,000 lakh 10 lakhs 85 lakhs. This is our part B, whose answer is 85 lakhs 46,000 85 lakhs 46,283 283. Okay. And next one is C. This is over here, ones, tens, 1000 ones, tens, 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs crore. So this is 9 crore 99,000 9 crore 99,046 okay. D is this one. I will write D after rubbing this, okay. So this is our question. I am just rubbing, first of all I am rubbing this question. Here is it. This is our part D. Ones, tens, 1000 lakhs 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs and crore.
So our answer of our part D is 9 crore 84 lakhs 84 lakhs 9 crore 84 lakhs 701. Okay, now let us go for our question number 3rd. Number 4th one is insert commas suitably and write the names according to International System of Numeration. Insert commas suitably. Insert commas suitably. Insert commas suitably and write the names according and write the names according and write the names according to international system according to international system of numeration according to international system of numeration international system of numeration. This is our first one whose answer is 4th part A 7891 7892 1092. B is part B is 745283 745283. C part C is 99985 Part D is 480 देखिए भाई इंटरनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पहले वंस टेंस थाउजेंड फिर कॉमा आता है आफ्टर दैट वंस टेंस 100 आफ्टर दैट 1000 10,000 100,000 10,000 100,000 and after that million 10 million. Okay, so this is 78 million 78 million 92 921,000 921,000 92. Okay, now 921,092. This is ones tens 100,000 10,000 100,000 and 7 million 1 million. Okay, so this is 7 million
Our part B is 7,452,000 283 83 is our answer. And our part B, I will solve our part C after rubbing the question. So our part C is, what is our part C? Our part C is this one: ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 99 million. This is 99 million. Part C is 99 million. 985,000 985,000 102. Okay. Our part D is, what is our part D? Our part D is ones, tens, 100,000, 10,000, 1,000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 48 million, 48 million, 49,000, 831. 831 is our आंसर. चलिए भाई देखो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एक्सरसाइज, है ना. बाकी अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. जय माता दी.